So today we are going to talk about physical quantities. Physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये बड़ा बेसिक टॉपिक है ये फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, we can measure mass. Mass is known as a physical quantity. We can measure length. Length is also known as a physical quantity. If I am saying mass of the object is equal to 3 kilogram, so this 3 है यहाँ पे numerical value और kilogram है unit for the measurement. तो इसको बोला जाएगा physical quantity because we are measuring it. Its numerical value is 3 and unit for the measurement is kilogram. एक और बात, इस यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। फॉर एग्जांपल, इफ इन एसआई इट इज मेजर्ड एज 3 किलोग्राम, तो इन सीजीएस इट इज मेजर्ड एज 3000 ग्राम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजरमेंट, ओनली द मोटिव इज different units and different numerical values. They basically depends upon the numerical value and the unit utilized, right? Physical quantities are further classified into two types. So types of physical quantities. Types of physical quantities. The first type of physical quantity is known as scalar physical quantities, and the second type of physical quantity is known as vector physical quantities. अब ये scalar और vector क्या होते हैं? When we can say कि physical quantity जो है वो scalar है और physical quantity जिसको हम measure कर रहे हैं वो vector है। जब आप लोग बात करेंगे scalar physical quantity की, scalar means I am only having magnitude, only having a numerical value, or we can say only having a number. If we are measuring any physical quantity either by a number, either by its magnitude, or either by its numerical value, then such a physical quantity is basically known as scalar physical quantity. जहां पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाएगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम, तो जब आप बात करते हैं मास 10 किलोग्राम, आप लोग कभी बात नहीं करते 10 किलोग्राम टुवर्ड्स ईस्ट और 10 किलोग्राम इन द वेस्ट डायरेक्शन। इट मींस दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डायरेक्शन एट ऑल। इज इट क्लियर? फाइन। सो 10 किलोग्राम इज बेसिकली नोन एज स्केलर और यू कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। While we are measuring the distance from one position to another position, there are many ways in which we are not talking about any direction. See, the way number one, if we are moving like that, तो यहाँ मैंने कल डायरेक्शन की बात नहीं करी। आप स्कूल से जब अपने घर जाते हैं, suppose the distance covered by you people is 3 kilometer, but I am not taking any particular direction. Then such physical quantity is known as scalar physical quantity, right? If second one is vector physical quantity. अब ये vector physical quantities क्या होंगी आपके पास? Vector physical quantities वो physical quantities होंगी जहां मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी करूंगा। मैग्नीट्यूड along with direction. Fine. Because this is the definition of the vector. A vector is specified by two particular things. One is known as magnitude and another one is known as direction. तो जहां आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे उनको मैं बोलूंगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, let us suppose these are the four particular directions which we are talking about. This is east, that is west, and this one is my north and this one is south.
अब अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर स्टैंडिंग हियर एट दिस पोजीशन O, let's have a distance of 5 kilometer towards south direction. Suppose this is 5 kilometer, that is position A. So when we are moving in a particular direction, it's 5 kilometer along, direction is south. Now I am talking about magnitude. यहाँ पे magnitude है 5 kilometer and direction is along the south. So this is known as vector physical quantity, right? So we can measure both scalar physical quantities also and vector physical quantities also. जब आप स्केलर की बात करेंगे सिर्फ हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन जब आप वेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन. फाइन. नेक्स्ट we are going to talk about the measurement of a physical quantity. physical quantity को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? measurement of a physical quantity. It is very easy to measure a physical quantity. आपको यहां तक इतना पता चल गया कि physical quantity एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं. फाइन. तो let us suppose this Q is the physical quantity, right? I am going to represent a physical quantity by Q. अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो आपको किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? नंबर 1, न्यूमेरिकल वैल्यू. फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड हियर इज न्यूमेरिकल वैल्यू and second one is unit for the measurement. Already you people have seen earlier. See, here I have given you one example, scalar physical quantities. For example, I am going to measure a mass. Mass is equal to 10 kilogram. तो बच्चे 10 है यहाँ पे scalar number and this kilogram is the unit. 10 है numerical value. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है उसके लिए एक तो चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपको चाहिए यूनिट. फाइन. सो वी कैन से this scalar physical quantity Q that is represented by n is the numerical value and u is the unit. Let us suppose that is our equation number 1. अब आप लोगों ने ऊपर देखा कि किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज कर दें तो देयर इज ओनली अ चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इन यूनिट, बट आपकी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, सी देयर इज वन एग्जांपल. I am saying let us suppose the mass of the body is equal to 3 kilogram. या तो मैं मास को 3 किलोग्राम लिखूं या मैं मास को 3000 ग्राम लिखूं. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो चेंज किस में आया? दिस फिजिकल क्वांटिटी ये तो रही सिर्फ आपके पास क्या हो? मास. न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट केस इज n1 whereas the unit is represented by u1. Numerical value in the second is represented by n2 whereas unit is represented by u2. It means for the same physical quantity I am having two different values depending upon the nature of the units. So again I can write this physical quantity Q which I have written in equation number 1, that is n multiplied by u. For the same measurement it can be written in two different ways. Let us suppose n1 is the numerical value in SI unit where u1 is the unit, and similarly n2 is the numerical value in second system of unit, maybe CGS or anything else. So this is n2 multiplied by u2, but this always remains constant. चेंज कोई नहीं आएगा आपके मास में. यहां मैंने एग्जांपल लिया था मास का. 3 kilogram is equal to 3000 kilogram. This is one and the same thing. So what I can write? I can write now n1 multiplied by u1 that is equal to n2 multiplied by u2. Fine. This is equal to constant. And or I can say from here n multiplied by u, numerical value multiplied by unit, that is always equal to constant. And from here numerical value किसके बराबर होगी? Numerical value is always written as constant divided by unit. This is very important result. और यहां से हम लोग प्रूव करेंगे for smaller unit numerical value is larger and for larger unit numerical value is smaller. See,
it is inversely proportional to unit. From here, numerical value is inversely proportional to unit. So what my conclusion is, larger the unit, smaller is the numerical value, and smaller the unit, larger is the numerical value. Fine. So this is how we can measure the units, the numerical values, and the physical quantities.